Hello everyone, this is Pratibha Singh Chauhan. I'm a practicing clinical psychologist. So today I'm going to talk about the first therapy session. In last couple of days, many people had been asking me कि आपसे अपॉइंटमेंट तो बुक हो गया है but what will happen in first therapy session? या मेरे family and friends को when I recommend someone, they ask me कि okay but session में होगा क्या? Am I allowed to keep things confidential? Am I allowed to speak a lot? Am I allowed to stay mum and just listen to the therapist, or am I allowed to cry? So it's very understandable that you have all these concerns and curiosities. So let me break it down for you. What is going to happen in first therapy session, or what usually happens in first therapy session? So when the first therapy session is scheduled, वन थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि पहला थेरेपी सेशन आपका किस थेरेपिस्ट के साथ है, उनकी ट्रेनिंग कैसी है, वो क्या जॉब प्रोफाइल में वर्क कर रहे हैं, आर दे वर्किंग इन प्राइवेट प्रैक्टिस, आर दे वर्किंग इन अ गवर्नमेंट सेटिंग, आर दे वर्किंग इन एन कॉरपोरेट, और यू आर टेकिंग अ सेशन ऑनलाइन. सो इन सब चीज़ों से फर्स्ट थेरेपी सेशन कैसा लिया जाएगा बहुत फ़र्क पड़ता है. सेकेंड, वॉट इज़ योर थेरेपिस्ट बेसिक theoretical orientation, or what is their approach towards therapy. So उससे भी फ़र्क पड़ेगा कि वो फर्स्ट सेशन में क्या अचीव करना चाहते हैं, वो क्या एजेंडा डिसाइड करते हैं. But nevertheless, there are certain elements that stays common across different approaches and style. I'm going to talk about that what will happen in first therapy session, what do I do, and what does first therapy session with me basically entails. फर्स्ट थिंग फर्स्ट. सो फर्स्ट, जब आप फर्स्ट सेशन शेड्यूल करते हैं, यू विल गो टू एनी डॉक्टर, यू वेट इन अ वेटिंग एरिया, राइट, and you wait for your appointment's turn to come. So it's like that any doctor visiting. So you wait for your turn, you wait for your appointment. One thing that's interesting and different than meeting a therapist and any other medical professional is यूजुअली वेटिंग टाइम आपका बाकी सारे प्रोफेशनल्स पे डिपेंडिंग ऑन द केस लोड्स, डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ पेशेंट आ डॉक्टर सीइंग माइट वेरी. शायद हो सकता है अपॉइंटमेंट के बावजूद आपको 5 से 10 मिनट वेट करना पड़े, या कभी कभी ज़्यादा हो जाता है बिकॉज मेडिकल प्रोफेशनल्स आर ऑल्सो वर्किंग इन इमरजेंसी सेटिंग्स. तो हो सकता है कुछ इमरजेंसी केस आ गया, हाफ एन आवर लेट हो गया, कुछ हो सकता है. बट व्हेन इट कम्स टू अ थेरेपिस्ट, मोस्टली थेरेपिस्ट, because I am practicing in a private setting, so मेरा schedule, if you have a session at 4, in 99% of the cases I'll be available to attend you at sharp 4. विल मेक श्योर कि 10 से 15 मिनट का लेट आपको भी अलाउड है, 10 से 15 मिनट का. आई ऑल्सो टेक द लिबर्टी कि 5 से 10 मिनट लेट हो गया, बट बियॉन्ड दैट इट विल नॉट हैपन दैट आपको उससे ज़्यादा वेट करना पड़े. सो वंस द वेटिंग time is done, we move on to the second step. Second step would be introductions. So therapy is all about getting to know each other. It's also an equivalent to any other kind of relationship because two human beings are interacting. It's a professional interaction between two human beings. तो आप अपने बहुत से डार्केस्ट सीक्रेट्स, वल्नरेबिलिटी शेयर करने वाले हैं किसी भी इंसान के साथ. सो इट्स इम्पॉर्टेंट दैट यू नो द अदर पर्सन. सो सेकेंड पार्ट में थेरेपिस्ट माइट गिव अ नॉर्मल इंट्रोडक्शन के आई एम सो एंड हाउ आर यू डूइंग एंड हाउ व्हाट ब्रिंग्स यू हियर. So I'm getting to know the person. So example, my name is Pratibha and I as a client enter any therapy session. So it might start like, hi Pratibha, how are you doing today? And after that is done, I personally like to introduce myself first and then open the floor for my clients. So I might say, hi, myself Pratibha Singh Chauhan, and I'm practicing as a clinical psychologist. I have done my work so and so. What's your good name? And I would like to know a little bit about you. Would you like to tell me a little more? आप कहाँ से हैं, आपकी फैमिली में कौन कौन है, how did you get to know about my clinic. So this is a basic general introduction to break the ice, to get familiar with each other. Once
that is done, third step is establishment of needs. So often many clients would come to a therapist with different ideas and goals in their mind, different needs. Okay, so अगर आप मेरे पास आते हैं, so it's very important for me to understand what your basic needs are, so that we can also establish if I'm going to be the right fit for you or not. If not, I can make a good referral for you. So this basically getting to know each other and establishment of needs might follow by a lot of questions, a lot of open-ended questions. Okay, what brings you here? What are your major concerns? क्या आपने कभी पहले थेरेपी ट्राई किया है? How your experience had been? What made you decide for therapy this time? And uh, what are your goals and agenda regarding therapy? आपकी क्या expectations हैं? क्या आपके जो मेंटल हेल्थ कंसर्न्स है वो कितने समय से हैं? इज देयर एनी मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर इन योर फैमिली? सो इट बेसिकली अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. सो ऑफन आई as a professional would like to gauge that how the client is receiving all this question. There might comes a time the client often gets bombarded with these questions और overwhelm नहीं करना, तो we go with a pace that a client is comfortable in. इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट क्लाइंट को सारी चीज़ें फर्स्ट सेशन में बतानी है या कुछ भी नहीं बताना है. द अप्रोच इज़ मॉडिफाइड एज पर द रेडीनेस एंड द नीड्स ऑफ द क्लाइंट. ओके, सो आपको कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे. आई विल बी टेकिंग अ पॉज. इफ़ यू वांट टू ऐड समथिंग, यू आर ओपन टू से एनीथिंग. जस्ट रिमेंबर, एज अ क्लाइंट इट्स योर एब्सोल्यूट राइट टू टेल एवरीथिंग दैट यू वांट टू. There is no right and wrong answer or right and wrong question in therapy. Once that is done, fourth, we come to deciding okay, now these are your concerns, and I'm so glad that you told me about it. It's a very important element we also do is risk assessment. Okay, with many mental health conditions, the risk of suicidal ideas and self harm comes in. सो आई ट्राई टू एड्रेस डैट इन फर्स्ट सेशन कि अगर आपको लेटली हैव यू बीन प्लानिंग टू हार्म योर सेल्फ, या आपके मन में आता है कि जीने का क्या ही मतलब. सो दैट हेल्प्स मी डिज़ाइन थेरेपी कीपिंग दोज इमीडिएट गोल्स इन माइंड. सो इन आई ट्राई टू एड्रेस दैट ड्यूरिंग द फर्स्ट सेशन इटसेल्फ. सो ये हो सकता है कि आपके भी थेरेपिस्ट आपको ये सवाल पूछे. नेक्स्ट, once that is done, I have adequate information. I again try to open the floor for my clients. So it might sound something like that I like to go ahead with. Is there something that I might have missed out and you would like to add? ऐसा कुछ है जो शायद मेरे से मिस आउट हो गया और आप शायद बताना चाहते थे, कुछ और है जो आप बताना चाहेंगे? And I try to keep 5 to 10 minutes window for that. So clients usually ask कि नहीं ठीक है, और they might ask कि फीस क्या रहेगी, कितने सेशन चाहिए होंगे, and that's absolutely okay. I'm more than happy. More the questions the client asks, more it gives me a sign that they are willing to work together. And one of the important thing, third, but absolutely important for me, is I like to insist that client ask questions about me. So I might ask them, okay, is there something that you want to know about me? Is there something जो शायद मैंने अपने इंट्रोडक्शन में मिस आउट कर दिया, और देयर इज़ एन इन्फॉर्मेशन दैट यू वुड लाइक टू एड्रेस और यू वुड लाइक टू नो अबाउट. सो दे माइट आस्क कि आप कितने टाइम से थेरेपी कर रहे हैं, क्या मेरे जैसे प्रॉब्लम्स वाले भी क्लाइंट आपके पास आते हैं? सो I love all these questions. It's so amazing. Then client open up and ask you. So once that is done, we move on to winding up of the session. So अभी as a clinician, as a therapist, मेरे पास information है client के बारे में. Client को भी time मिल गया to get to know about the therapist. So by this time, I might have decided if I would be a right fit for my client or not. So we decide and we try to reschedule a session, schedule another session. सो एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट आपको आपके थेरेपिस्ट फीस स्ट्रक्चर के बारे में बताएंगे,
थेरेपी रूल्स के बारे में बताएंगे कि थेरेपी सेशन कितना लंबा होता है, आपको कब तक आना है, अपॉइंटमेंट कैसे लिया जाएगा, कैसे सेशन शेड्यूल होगा। तो ये सारी जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है आपको दी जाएगी। एंड इफ़ यू आर विलिंग, they will give you also the next appointment date and time. So that's all about a crux about the first therapy session. A common elements, so depending on what client I'm dealing with, is it an individual, is it a geriatric population, is it child, adolescent, am I conducting family therapy sessions? So it might change a little, or in some cases a lot, but overall this is how the first therapy session might look like. If you have any questions, please comment or reach out to me, and have a nice day.